Hello everyone, can you see and hear me? Hello Christy, hello everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis of the 29th of July. I am Vaishnavi, and this is presented to you by Unacademy. So we are going to do the analysis of 29th. For that, all right. Okay. Hello Alpesh, hello Christy, hello Vedika, bonjour. Hi Hevan, guten Tag. Guten Tag, Hevan. Gurnoor, hi, Gurnoor. Gurnoor is also here. All right, amazing. So, let me just inform on the group that I'm live. Aditya, hello, Harshika. Good afternoon, Harshika. Good afternoon, everyone. And I welcome you to today's session. Let's get started with the session. Ah, in one go. All right. So this is my Telegram channel. अगर अभी तक आपने मेरा Telegram channel नहीं subscribe किया है, so please make sure that you do as soon as possible because a lot happens on the channel and you get to know about the happenings of my class as well on the channel. Okay. So the name of my channel channel the name of my channel is Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. And if you're not getting it that way, you can simply type Vaishnavi Pandey 31 and you will be able to find my channel. If you're not getting it that way either, then you can scan the QR code and it will take you straight to my channel. अगर आपको इस क्लास के PDF notes चाहिए, जो भी discussion हुआ है क्लास में उसका आपको PDF notes चाहिए along with the annotation, then you can scan this QR code and it will take you straight to the notes. All right. The Wheel of Free English is an editorial series, sorry, English series जिसमें हम बहुत कुछ करते हैं, RCs करते हैं, editorial quizzes करते हैं, जिसका आज we are going to be doing editorial quiz, right? Editorial quiz करने वाले हैं, editorial quiz. Okay, so editorial vocabulary quiz होता है ये always, and it is we generally have 40 questions or 42 questions that we discuss. Uh, on which I quiz you based on the vocabulary जो editorials में हमने use किए हैं और इस बार हम third week of July के editorials का quiz लेंगे, okay? So can we get started? Vedika, hi, long time no see. All right, so can we get started? आज के words बहुत difficult नहीं again. Now you must be seeing कि आधे से ज़्यादा words जो हम discuss करते हैं, you know the words, right? So, have you noticed that, by the way? John Doe is here. What happened? Good evening. John Doe क्या हो गया? Breakfast बहुत कर लिया, नींद आ गई, 2 घंटा सो गया, अभी उठा. वाह, बहुत अच्छा आदित्य, गुड जॉब, गुड जॉब. Yes,
yes, nowadays you must have been using these words as well. I'm so glad that we got to a level that is of vocabulary. We are able to achieve the level of vocabulary that we really want to. Okay, so this is definitely helping, I believe. I would say it is. To the students who are regular, of course, okay, and making sentences, okay. So शुरू करते हैं आज के वर्ड्स. डिफर हमने पहले भी देख लिया है. डिफर का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ. ओके, कोई भी चीज को, एक्शन और इवेंट को एक लेटर टाइम पे पोस्टपोन करना इज टू डिफर. ऑल राइट. So can we get started again? You can make as many sentences as possible with words. Okay. So it doesn't have to be a certain number of words, sentences. Okay. So put off कर देना कोई भी एक्शन को. कोई भी आपको काम है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप को आरसी सॉल्व करनी है. आज 4 आरसी सॉल्व करनी है, लेकिन आपने सोचा कि आज सैटरडे है तो थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, और इसको आपने क्या कर दिया? डिफर कर दिया या पुट ऑफ कर दिया. ओके, सो दिस एक्टिविटी यू डिफर्ड और पुट इट ऑफ. ओके, सो दैट इज टू डिफर, पोस्टपोन करना होता है. ओके, नीडलेसली. ओके, एल वाई आ गया तो डेफिनेटली एडवर्ब फॉर्म होगा. ओके, डेफिनेटली मोस्ट लाइकली एडवर्ब फॉर्म होगा, और एडवर्ब फॉर्म ही है. ओके, नीडलेसली. ओके, सो नीडलेस टू से, जनरली हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज नीडलेस टू से you are the star of the show. ओके, नीडलेस टू से यू आर द स्टार ऑफ द शो. दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ. ओके, सो नीडलेसली इज इन अ वे दैट इज अननेसेसरली, बिकॉज इट इज अवॉइडेबल. ओके, सो नीडलेसली इन अ वे दैट इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज अवॉइडेबल. ओके, कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो? अननेसेसरली अननेसेसरी कर रहे हो बिकॉज इट इज अवॉइडेबल. ओके, सो नीडलेसली इन अ वे दैट इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज अवॉइडेबल. ओके, तो क्यों नीडलेसली कभी यूज करते हैं? जब कोई जरूरत नहीं है. ओके, अवॉइड किया जा सकता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, तब हम नीडलेसली भी यूज करते हैं और नीडलेस भी यूज करते हैं. ओके, सो द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग इज नीडलेस. ओके, दैट मीन्स इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है. व्हाई आर यू इंक्लूडिंग दिस पॉइंट्स? ओके, सो दैट इज नीडलेस. ओके, कोई काम नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है इसको, इसके बिना भी काम चल सकता है. All those are, but we'll still take it as a new word. Okay, needlessly. Again, this problem. Anyway, okay. Then we have accommodative. Okay, accommodative, accommodate करना. Okay, is the accommodate करना किसी को is the verb form, right? Accommodate is to accommodate someone is the verb form. ये verb form हो गया, और इसका accommodative is the adjective form. Okay, अगर हम यहाँ पर अकोमोडेटिवली लगा दें, ओके, एल वाई लगा दें, तो इट बिकम्स द एडवर्ब फॉर्म. ओके, सो अकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है? विलिंग टू फिट इन विथ समवन्स विशेस और नीड्स. ओके, विलिंग टू फिट इन विथ समवन्स विशेस और नीड्स इज अकोमोडेटिव. ओके, तो आप किसी की नीड्स और किसी के विशेस के से एडजस्ट करने के लिए तैयार हो. आप अपने आपको या अपनी चीजों को या अपने काम को उनके विशेस से फिट करने के लिए तैयार हो. दैट इज अकोमोडेटिव. ओके, देन वी हैव अगेन दिस वर्ड वी हैव डन बिफोर, ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल भी हमने किया है, लेकिन इसको एक नया वर्ड ले लेते हैं. ओके, ऑस्टेंसिबल इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो. ओके, सो ऑस्टेंसिबली इज the adverb form ostensibly. Okay, so presumably. Okay, ostensible,
प्रिज्यूमेबल, ओके। सो यहाँ पर प्रिज्यूमेबली भी है, ओके। ऑस्टेंसिबली इज वेरी सिमिलर टू प्रिज्यूमेबली, ओके। सो अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबल इज अपेरेंटेबल, ओके। सो अपेरेंटली और ऑस्टेंसिबल, ओके। सो स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली, सो देखने में लगता है कि सही है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सही होगा ही होगा, ओके। दैट इज ऑस्टेंसिबल। देन इज इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल इन आ गया है, सो समथिंग नॉट होता है इन प्रीफिक्स का मतलब, राइट। सो इनडिस्पेंसिबल मतलब कोई चीज जिसको हम डिस्पेंस नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, ओके। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, नेसेसरी, ओके। बहुत जरूरत होती है, तो ऐसे चीज को इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। नाउ इंडिस्पेंसिबल इज, लेट्स कंसिडर इट अ न्यू वर्ड। जनरली इट इज यूज्ड एज in designation or in position. So for example, you have to become indispensable, or else you will be disposed of very soon, okay. So you have to become indispensable in your job profile, मतलब आपको आपका वहां रहना बहुत जरूरी है, आपको ऐसा काम करना है कि आपका वहां रहना बहुत जरूरी हो जाए, आपके बिना कोई काम ना चले, ओके। सो दैट इज बिकमिंग indispensable, मतलब आपके बिना कोई काम नहीं होगा। एंड people generally say in private organizations people are डिस्पेंसिबल, ओके। पीपल आर इजिली डिस्पेंसिबल, ओके। मतलब बहुत रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड व्हाट यू हैव टू बिकम इज इंडिस्पेंसिबल, ओके, बिकॉज इट्स ओनली यू हु कैन डू इट, ओके। सो यू हैव टू बिकम दैट। सो इंडिस्पेंसिबल इज द एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, ओके। हेल्म का मतलब क्या होता है? पोजिशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल। एट द हेल्म ऑफ मतलब एट द टॉप ऑफ पावर और इन अ टॉप पोजिशन, ओके। हेल्म का मतलब अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल, ओके। नाउ शिप ऑल्सो हैज अ helm, right? So here it is not talking about the ship helm, here it is talking about a position of leadership or control, okay. At the helm of हम use करते हैं plenary, okay. Plenary is something that we are seeing for the first time. Oh my God, this is it. Okay, got it. Okay, ठीक है। प्लेनरी, प्लेनरी इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट होता है, अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट होता है, ओके। अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट इज प्लेनरी, ओके। प्लेनरी एक्शंस, प्लेनरी डिसीजन, ओके। सो एब्सोल्यूट डिसीजन या अनक्वालिफाइड डिसीजन, ओके। It can be absolute or unqualified as well. All right, so this is a new word. कंप्लायंस इज नॉट अ न्यू वर्ड। कंप्लायंस हमने बहुत बार देख लिया है। इट इज अ नाउन जिसका मतलब होता है एक्शन और फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद विशेस और कमांड। किसी के विशेस और कमांड को आप उससे सहमति जता रहे हो या उनको मान रहे हो, ओके। तो दैट इज कंप्लायंस, ओके। सो अगर आप किसी के विशेस या डिमांड्स को, ओके, आप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप मान रहे हो उनके डिसीजंस, उनके कमांड, तो यू आर इन कंप्लायंस विद देयर ऑर्डर्स, ओके, और विद द अथॉरिटी, ओके। presumably is an adverb, okay. Presumable, presumably, okay. ly आ गया, adverb हो गया, used to convey that what is asserted is very likely though not known for certain, okay. जो भी बोला गया है वो बहुत लाइकली है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि सही होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पक्का से कह सकते हैं कि ये एकदम सही है, ओके। सो प्रिज्यूमेबली इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज लाइकली टू बी ट्रू, ओके, और लाइकली टू बी द केस, लेकिन सर्टेनली नहीं बोल सकते, ओके। सो प्रिज्यूमेबली एंड सर्टेनली आर नॉट द सेम, ओके। देन वी हैव then we have the next word, डेलीगेशन, ओके। डेलीगेशन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। डेलीगेशन भी हमने पहले देख लिया, ओके। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन
normally from a manager or a subordinate, okay, to carry out specific activities. Okay, so delegate karna task. Okay, so delegate is the verb form. Delegate something is the verb form, and then you have delegation. तो delegation क्या होता है? किसी को assign करना कोई certain authority, okay, is to delegate the powers or delegate the authority to someone, okay, to another person, normally from a manager to subordinate, generally ऊपर से नीचे जाता है, okay, delegation, okay, you're delegating tasks from a higher authority to lower authority. To carry out specific activities, कोई भी specific activity carry out करने के लिए आप किसी को authority देते हो कि ये काम तुम्हारा है, okay, you are the espionage of this mission, okay, so you have to go to Russia, okay. uh, so the task of espionage is being delegated to you. That is delegation, okay. Countenance, okay, countenance भी हमने पहले देख लिया है. Countenance is support or approval, okay, किसी चीज को countenance provide करना है is to provide support or approval to something, okay. Hmm. Hi, Sakshi. Hi. Your classes means a lot in comprehending passages, frankly speaking. Thank you, Aditya. And only those who have actually understood the real value of these classes are the ones who have stuck around. Rest, um, they come and they go. Cheers to that. Okay. Thank you, Aditya. Means a lot to me as well. Um, मैम ये आई बेग टू डिफर मतलब क्या होता है? मतलब आई एम गोइंग टू have a difference of opinion, okay, politely saying that कि मैं आपसे सहमति नहीं जता सकता हूँ, I have a different opinion, so I beg मतलब I am sorry but I have to differ, okay, from your opinion, okay, so that is the meaning, Alpesh. uh, Deferring a work for later will burden you a lot. True incident. Yeah, Vedika, absolutely. If you keep deferring a work, it keeps getting piled up, and then you have a plethora of work that you have not touched at all. And then starts the procrastination again because there's so much to do and you're not doing it. And now you are an self-annihilating ticking time bomb. uh, Good job. Christy, my mom always defer my Goa trip and she thinks that my trip is needless. Yes, very nice, Christy. Good job. Anmesh, I was just going to defer this lecture because I forgot about it. Anmesh, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, please. uh, uh, so thank you for coming. uh, Gurnur, today I I'll defer my sleep for this class. Oh, thank you, Gurnur. My God, कितनी एहसान है आपके हमारे ऊपर क्या होता है? Aditya, I think I have to defer. I have to defer my appointment with Priyanka Chopra as I'm busy in sleeping. Aditya, and when you're sleeping, you're dreaming about Priyanka Chopra. So I think you should go on a date with Priyanka. Okay, appointment, not date, appointment. You have an appointment with Priyanka Chopra. Good job, Aditya. My principal needlessly deferred my leave and was not being accommodative with me. Very nice, Alpesh. Good job. Christy, I accommodate with my mother's choices always. Okay, mother apostrophe S. Okay. Good job, Christy. Unmesh, Captain America tried to accommodate with Iron Man, which is in Civil War, but they were too much. Uh, to cope with, okay, they were too much to cope with, okay, cope up नहीं होता है कोई चीज, okay, cope हमेशा होता है अन्वेष, okay, so you don't write cope up, you always say cope with, okay, so cope with. Yeah, good sentence, Anmesh, good job. Civil War. Hmm. Didn't like that movie that much though, but nice, okay. uh Sanjana, my brother is needlessly convincing dad for day out with his friend, but I have already given dad false information about his tour.
How evil, Sanjana. Good sentence though. Alpesh, perhaps he deferred my leave because he thought my reason were ostensible. Very nice, Alpesh. Very nice. Good job. Christy, while solving RC, all options are ostensibly for me. All options seem ostensible for me. Okay. All options, all options seem ostensible to me. Okay, very nice, Christy. And Messi was indispensable for Argentina in World Cup. Absolutely correct. Anmesh, good job. Gulnoor, being too much accommodative feels cringy sometimes. Yes, it is. Okay, Christy, good job, Gunu. Christy, having faith in God is indispensable for me. Very nice, Christy. Good job. Vedika, I try to accommodate other apostrophe yes, others' opinions and needs if it is accurate in a good way. If the intentions are right, okay. If the intentions are right, okay. Accurate in a good way. Accurate is always good, okay. If you're accurate about something, it is always good. So you just simply say if it is, what did I just say? If it is honest, also you can say, okay? Alpesh, but my leave was indispensable as I really wanted to give that exam. Very nice, Alpesh. Good job. Good job. So the nice continuation to your story. Good job. Sanjana, I defer to watch The Little Mermaid because of my mock. Very nice, Sanjana. Good decision. Alpesh, that day I came to know that the principal was plenary for the helm of this school. Very nice. Very nice. That day I came to know. Very nice, Alpesh. Good job. My mother is at the helm in the house. Very nice in in my house. Very nice. Good job. Vedika, the school accepted my leave note because they thought that the reason was ostensible. Very nice. Good job. Okay, moving on. His ostensible confidence masked his inner insecurities. Wah, John Doe मजा आ गया बहुत अच्छा. Very nice, good job. Alpesh, after the incident, my parents called him seeking his compliance with the same. वाह वाह क्या sentence लिख रहे हो यार आजकल आप लोग. uh, Aditya, I tried to accommodate my family in a single room in Taj Clubhouse, Chennai, but the receptionist denied as we were four members and I had booked the room for three. Very nice, very nice, very nice. Good job. Good job, Aditya. Good job. Kajal, hi. Hi, good afternoon, Kajal. Um, Here and there, Kajal appears. Pops up like a pop-up. Okay, Alpesh, he had the audacity. Ooh, he had the audacity. Nice. To tell my parents that the reason you are giving is presumably framed. The reason I was giving, the reasons I was giving, the reasons I was giving was presumably framed. Very nice, Alpesh. Good job. Very nice. Vedika, hard work and luck both are indispensable to become successful. Wow. Wow. Very nice, Vedika. The exhausted student's countenance brightened after consuming a can of Red Bull, energizing them for the upcoming exam. Very nice, John Doe. Good job. Good job. Which example is you, Hivan? What was I talking about that time? Okay, anyway, uh, Gurnoor, conspiracy about the multiverse could presumably be ostensible. Oh, did you get to know about the Area 51 UFO sighting or something like that? Something about the UFOs, right? Someone has given a statement that they actually found a UFO with uh, bio remains of another species or organisms or another verse from another universe or something. Vedika,
Mr. Modi is at the helm of PM's position. Very nice, Vedika. Good job. Simple as that. Very nice. Alpesh, then my parents went toxic and questioned the morality of delegation. Who hired him? As to who hired him. Very nice, Alpesh. Good job. So the story continues. Okay. Christy, before asking my mother to allow me for hanging out with my friends for a day, I presume that, okay, I presume that she will allow me, but okay. Before asking my mother to allow me to hang out with my friends for a day, I assumed or I presumed that she will, which she did not. Okay, very nice, Christy. Good job, Aditya. Yesterday, as I was not complying with my boss's order, he kicked me out of the office. Very nice, Aditya. Good job. Some of my friends always countenance me to work hard whenever I lose confidence. Very nice, Christy. Lose, LOSE. Okay. Alpesh, after such a wrangled scuffle, you can say, he declared countenance with my leave application. Oh, finally. Yay, you got your leave application approved. Yay. Okay. Nick Jonas will kick him out. Is indispensable for this productive work. Yes, Jonto. Chai. By the way, it's chai. Not chai tea like Starbucks. What the hell is a chai tea? I don't understand. Why do they call it chai and tea both? That is so stupid. But anyway, um, so it is simply chai. Um, so tea, although it is completely cold, but I like it that way. I'm helming in my relationship. Very nice, Sanjana. Great job, good job, because that is a simple and efficient use of the word. Okay, very nice. I ostensibly have the ability to deal with my boss. Very nice, Aditya. I had to defer. Even spelling देखना, I had to defer the meeting with Dawood Ibrahim due to some reasons. Okay, what happened? Car troubles. Christy, I always comply with your strategy for CLAT V. Still, I'm not able to get 5 out of 5. You will soon, Christy, and if you're not there, you will get there. Don't you worry, and don't ever drop it at this point. Okay, when your marks are increasing or it seems stagnant. Okay, कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका marks नहीं increase हो रहा है. This is the phase that generally people lose hope and quit. Okay, that इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से तो नहीं होने वाला. But once you cross this threshold, you will see that accuracy एकदम धनाधन आएगी आपकी. ठीक है. uh, Coffee is indispensable for my day to start. Very nice, Sanjana. My father always has a countenance over my opinions. Very nice, Vedika. Good job. Sakshi, आपको पता है मैम, I have deferred my breakfast just because of this class. पता नहीं क्यों. I'm just oh, Sakshi. So cute, so nice. I also don't have breakfast actually before the class. I have brunch after the class every time. So from Monday to Saturday, I generally have brunch because I cannot take class after having a full breakfast like a meal. I cannot. So I just have 2 meals a day. And actually, that's not a good thing. I'm not saying that you're doing a good thing. You should please have your breakfast along with the class. Okay. So I don't mind that because I'm not able to see it. So as long as you're having breakfast, you're full, you will be able to concentrate as well. और आपको और मजा आएगा. So Sakshi, please have breakfast. Presumably, yes. So presumably को मैं फिर से explain कर देती हूँ. Presumably का मतलब क्या होता है कि ऐसा हमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सही है. ओके, सो प्रिज्यूमेबली we presumably decided that uh, today is going to be a sunny day. Okay, today is going to be a sunny day. However, we were caught in a huge
storm, okay, thunder and storm, okay. So presumably मतलब आपने ऐसा सोचा और most likely कि ये सही है, okay, लेकिन ऐसा sure नहीं है, certainty के साथ नहीं कह सकते. It is not a fact, but it is most likely true, okay, most likely true, not necessarily a fact, okay. सेंटेंस कौन सा, मैं ओ गुरनूर कौन सा सेंटेंस मुझे दिखा भी नहीं. हेल्म इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम. Helm is indispensable for the team. Nice. Okay. Was this the sentence? Congratulations on the Helm chef job in Area 51. You'll prepare the best chicken wings for aliens who love them, unaware they are not chicken. Ishant is so dark, and his humor is also dark. Gurnur, you should meet Ishant and his jokes. It's generally very, very dark. The things that he says, Ishant. We have missed you, Ishant. Where have you been? I prefer heavy breakfast and skip the lunch. Very nice, Aditya. Breakfast is something that is a must because it starts your day and you are eating after a long gap. But I just cannot stuff food in the morning. I don't know what happens to me, even if the food is. In fact, I'm not very a huge fan of eating itself. Okay, so Uh, last three words, okay? Incomprehensible, credential, and detract. Okay, these are the three words. So देखते हैं incomprehensible, comprehend करना. Okay, reading comprehension जब आप solve कर रहे हो तो आपको obviously पता होगा कि comprehend करना मतलब understand करना, right? It is to understand something. In मतलब not होता है, okay? So not understand. We not understand. Okay, so incomprehensible is an adjective जिसका मतलब होता है not able to understood. What? Not able to be understood. Okay, then it is fine. Not intelligible. Okay, मतलब इसको हम comprehend नहीं कर सकते हैं, ये knowledge में नहीं transform हो सकता, हमें नहीं समझ में आ रहा. Okay, so synonyms है indecipherable, incoherent, unintelligible. Okay, antonyms है intelligible and comprehensible. Very nice. Okay. So opposites are very obvious. Okay, unintelligible is the synonym, so intelligible will be the antonym. Incomprehensible is the word, so comprehensible will be the antonym. All right, so that is the meaning. Okay, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है. This thing is बिल्कुल समझ के बाहर है. Okay, so incomprehensible है ये चीज तो. Maths is incomprehensible. Not really, but for me, for me. Okay, math is incomprehensible for me. Okay, credential. Okay, next word is credential. Credentials किसी के credentials मानते हैं. Okay, तो credentials क्या होता है? Qualification या achievement, quality or aspect of a person's background, especially when used to indicate their suitability for something. Okay, कोई चीज के लिए उनकी suitability चेक करते हैं कि कितना सही रहेगा ये इंसान इस जॉब के लिए, तो हम उनका credentials चेक करते हैं. Okay, कि क्या 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 अचीवमेंट है, क्या क्या क्वालिटी है, हैज ही मैनेज्ड अ टीम बिफोर, if we are looking for a position of manager. So you check the credentials of a person, you check the qualification of a person, achievements of a person, quality of a person. Okay, so that is credential. And finally, the last word is detract. Okay, detract करना मतलब diminish the worth of something. Okay, किसी चीज की value घटाना. Okay, a quality of or achievement, किसी का quality घटाना, basically कोई चीज को it's a downer. Okay, detract is a downer. Okay, so synonyms हो गया belittle, diminish, reduce. Okay, belittle करना नीचा दिखाना, किसी का value कम करना, घटाना. Okay, antonym हो गया enhanced. Okay, so these are the words. Your science passage is really incomprehensible for Alpesh. Incomprehensible for like Alpesh because he is a science student. नहीं भी होता तो भी पता कैसे वो कर लेता है. Christy is frustrated कि reading comprehension नहीं सब 5 out of 5 नहीं आ रहा है क्रिस्टी को. और अल्पेश को कैसे आ रहा है? Okay.
Christy, I love that you're so competitive. Very nice, Christy. And I love that it is troubling you that much. It should trouble you, okay? And keep it up, Christy. All right, so can we move on? No, no, Gurnoor, he will not say hi. Gurnoor, he has become like I have always said, Akarshan and Ishant. आकर्षण तो और भयंकर ही बट आकर्षण and ईशांत these two are the Schrodinger's cats of our class. Okay, Schrodinger's cat, you don't know whether they are dead or alive unless and until they write something on the they are dead alive in the class. Okay, whether they are in the class or not, you will not get to know throughout the class. Only you get to know once you see their comment. So you never know. Yeah, yeah, Vedika, you're absolutely right. मैं भी समझ गई ईशान को. I let him be. It's his process. That's how he functions. So it is okay for me. Mm, Wasim Mewati, I am eliminating all those friends who detract my courage in my CLAT preparation. बहुत अच्छा. Detract them completely. Okay, sorry, annihilate them completely. Finish them. But he's always there in the shadows. Yes, yes. But I don't know when. Okay, all right, so let's move on to the important announcements. Very nice sentences, everyone. Fantastic. You did well. Now, moving on to the important announcements. You will be able to get 35% off and up to 3 months free extension on our CLAT Iconic subscription. अगर आप Iconic subscription ले रहे हैं, which this offer has been extended to 31st July तक. So please make sure that you use my code Vaishnavi10 to avail this offer on the store. तो Iconic में 3 packages हैं, 6 months plus 3 months, 12 months package and 18 months package. Okay, so you can use either of the 3 packages and 6 months के साथ आपको 3 months extension भी free मिल रहा है and you're saving a whole lot of money. Okay, same goes with plus. क्लैट का प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 25% ऑफ मिल रहा है और 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है. सो 6 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको बिल्कुल फ्री 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 मिल रहा है. Okay, and so this becomes a 9 month package in that case. Okay, so 9 months, 12 months, and 18 months. So you will be again saving a buttload of money because of the discount, and this discount is only available till July 31st. So you can use my code Vaishnavi10 to unlock the offer. बेनिफिट्स क्या क्या है इन डिस्काउंट्स के, ये जो डिस्काउंट मिल रहा है इसका बेनिफिट क्या क्या है. सब्सक्राइब टू 6 मंथ. अगर आप 6 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको पीडीएफ ऑफ मॉक टेस्ट जिसमें 10 फुल लेंथ और 10 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे. ओके, अगर आप 15 और आपको 15 मिनट्स का 1-on-1 जूम मेंटरशिप भी मिल सकता है. मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा टॉप एजुकेटर से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. तो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको पीडीएफ नोट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिल रहा है जिसमें 10 फुल लेंथ और 10 सेक्शनल मिल रहा है. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा है कि 15 मिनट्स आपको 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस मिल रहे हैं फ्रॉम अ टॉप एजुकेटर्स बॉट्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड. ठीक है, अगर आपने ऑफर पीरियड में ये 31st जुलाई तक लिया है तो आपको 15 मिनट्स का 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा. ऑल इंडिया क्लैट यूजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट इज हियर विच इज हैपनिंग ऑन द 30th of July at 2 p.m. So make sure that you scan this QR code and enroll yourself now because mocks are very important, and in this one you get an opportunity to win a scholarship worth up to 90%. So enroll now. ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट 2024 इज अ पैक ऑफ 35 जिसमें आपको 30 फुल लेंथ क्लैट के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 5 फुल लेंथ एलेट के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट द Unacademy store at a discounted price of 3,150 and you can use my codes to get this discount. Okay, 40% off आपको मिल रहा है up to, and this PDF is this pack is absolutely free for plus and iconic subscribers. CLAT के printed mocks जिसमें 10 sectional mocks, 10 full length mocks that will be based on the new pattern will be delivered right at your doorstep, and this is available with all iconic and 12 months and above plus subscription. Okay, so
Another important announcement is that you will be able to experience CLAT before the CLAT exam. अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में अगर आपको देना है ऑफलाइन मॉक्स, so you can do that. Online students can give this offline mock that is happening or on our Unacademy center. दिल्ली और पुणे के सेंटर में एड्रेसेस दिए हुए हैं कि कहाँ पे है दिल्ली का सेंटर और पुणे का सेंटर, एंड द एग्जाम डेट्स आर हियर. दीज आर द मॉक्स दैट विल बी हैपनिंग ऑफलाइन. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये ऑफर अवेलेबल है, या आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले भी रहे तो ऑफलाइन मॉक्स विल इनिशियली बी कंडक्टेड आउट ऑफ दिल्ली एंड पुणे सेंटर्स ओनली. अभी बस दिल्ली और पुणे सेंटर्स के लिए में ही कंडक्ट हो रहे हैं. टेस्ट टाइम टेबल कुड बी सब्जेक्ट टू चेंज. अगर टेस्ट टाइम 2 PM रखा गया है, probably it can be changed. Additional mock tests could be added apart from schedule shown. Okay, तो और additional mock test add हो सकता है apart from the schedule जो दिखाया हुआ है. Okay, these are the conditions applied. जुलाई का हमारे पास कैलेंडर आ गया. दिस इज द जुलाई का कैलेंडर. मेक श्योर दैट यू गिविंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल. गलत सही जैसा आपको लग रहा है, यू डोंट हैव टू जज द मॉक, यू जस्ट हैव टू गिव द मॉक. ओके, सो दैट यू गेट एक्सपीरियंस. ओके, don't be a cricket critic if you have never played cricket in your entire life, right? So in the same way, don't criticize the mocks before if you are not giving the mocks. Okay, so don't be a judge of something if you're not a connoisseur of something. Okay, so level up for CLAT is a foundational batch for CLAT, AILET, SLAT, LSAT, MHCET 2024. So अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है. आप अपने आप को enroll कर सकते हैं इस बैच में by using my code Vaishnavi10. So अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको up to 35% ऑफ मिलेगा अपॉन एनरोलमेंट. एंड अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स दैट यू हैव सीन. आपको ये मिलेगा if you use my code Vaishnavi10, and I'm taking English language in this batch. अगर आपको ये बैच में एडमिशन नहीं लेना है, probably your favorite educator is in this batch, तो आप इस the warriors को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर क्लैट 2024. अगेन यू कैन यूज माई कोड Vaishnavi10 टू गेट द सेम, अवेल द सेम फॉर आइकॉनिक एंड प्लस ऑफर्स. ओके, आई एम टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश में आपके पास एक ही फेवरेट एजुकेटर है, दैट इज मी, मैं ही हूँ. ओके, ओके, क्लास सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या क्या है? प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, दो तरह के सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, प्लस है, आइकॉनिक है. प्लस इज अ बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड विद. डेली लाइव क्लासेस इसमें मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, एक्सेस टू ई नोट्स मिलता है. ये सारा कुछ मिलता है आपको आइकॉनिक में. अलॉन्ग विद दैट यू गेट लाइव मेंटरिंग सेशन, डिटेल फिजिकल नोट्स दैट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर डोरस्टेप, प्रिंटेड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दैट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर डोरस्टेप, एंड you will be able to attend offline mock test at our Unacademy center. Pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out. Uh, Hivan's car is troubling him. Yes, too much promo. My God, it felt like forever. But anyway, pens and highlighters out. It is time to take out your pens and highlighters and open your Hindu editorial page to the first column editorial. Okay, needless move. All right, you ready, everyone? Can we get rolling? Vedika, what do you say? What do you say, Vedika? What do you say? आज वेदिका को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा because she has appeared after a long time. She wants to attend the class, but she has school. But वेदिका, स्कूल डेली मत जाओ आप. कभी तो छुट्टी लो. Okay. So let's look at the conclusion. By allowing ED chiefs continuance, okay? ED के chief का continuance मतलब उनका continued वहां पर उनके position पे उनका रहना. The SC, the Supreme Court has undermined its own authority. उनको रहने देने वहां पर अपने position पे Supreme Court ने अपनी ही authority को undermine कर लिया है. Okay? So
Oh, I think we should roll. All right, Aditya. I think so too. Let's commence. My father allows me to buy, not my mom. What are we talking about? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. I lose context most of the time and then I just see हाँ हाँ मैम भी बोल दी. क्या बोला मैंने मुझे तो पता भी नहीं है. Anyway, coming back to the शुरू करते हैं editorial. Okay, editorial शुरू करते हैं. Okay, so this becomes the conclusion. Okay, ये बन जाता है हमारा conclusion. Number Bengaluru. Okay, um, let's get started. It comes no more as a shock or surprise if the Supreme Court is seen as deferring excessively to the courts, to the government's wishes. Okay, अब देखो ये ज्यादा क्या आ रहा है. देखो the author has explicitly सबसे पहले emotions की ही बात की. Okay, author ने कि no more as a shock. Okay, ये shock or surprise, it comes no more as a shock or surprise if the Supreme Court is seen as differing excessively to the government's wishes. ये बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बहुत शॉकिंग चीज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की विशेस नहीं मान रहा है. ओके, डिफरिंग टू द विशेस. ओके, ये कोई शॉकिंग और बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग इंसिडेंट्स नहीं. ओके, द ऑर्डर अलाउइंग. ओके, this is not only the main idea. The order allowing Sanjay Kumar Mishra, head of the Enforcement Directorate, ED, to continue till September 15th at the center's request is needlessly accommodative. Okay, लेकिन ये जो चीज है ये तो बहुत ज्यादा ही accommodative हो गया. Okay, ऑथर ने स्टार्ट किया कि शॉकिंग और सरप्राइजिंग ये चीज नहीं होगी कि कोर्ट डिफर कर रहा है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के विशेष से. ओके, सरप्राइजिंग और शॉकिंग ये वाला इंसिडेंस है कि संजय कुमार मिश्रा को जो ईडी के डायरेक्टोरेट है उनको सितंबर 15 तक कंटिन्यू करने की अनुमति दी जा रही है. और ये बहुत ही ज्यादा अकोमोडेटिव है, बहुत ही ज्यादा अकोमोडेटिव है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट साइड. ओके, सो दिस बिकम्स द मेन आइडिया, राइट? दिस बिकम्स द entire thing becomes the main idea. All right, so let's move on and see what the author has to say for the rest of the editorial. It was only on July 11th that the court declared illegal the extensions given to Mr. Mishra in 2021 and 2022. अभी कुछ दिन पहले ही, ओके, 11 जुलाई को हमने और ये वाला एडिटोरियल भी हमने देखा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया उनको, उनका एक्सटेंशन को. okay? उनका जो एक्सटेंशन हो रहा था, 5 साल का जो एक्सटेंशन हो गया था, उसको इलीगल घोषित कर दिया 21 से 22 को. ओके, at the same time, he was permitted to continue till July 31st to ensure a smooth transition. और साथ ही साथ उनको लेकिन इलीगल तो घोषित कर दिया गया इस चीज को, एक्सटेंशन को, लेकिन साथ ही साथ जुलाई 31st तक उनको अलाउ कर दिया गया कि आप ताकि द ऑफिस इज रन स्मूथली. ठीक है, अब देखो क्या होता है. Yet, without any submission that the process to select his successor has been set in motion, the court has invoked an undefined larger nation interest to allow him to go on up to September 15th. Okay, so this is the problem that the author is talking about. Okay, ये है मेन मुद्दा, ये है प्रॉब्लम इस चीज का कि बिना किसी चीज, बिना सबमिशन प्रोसेस के उन्होंने क्या कर दिया है, सिलेक्ट करने के लिए मोशन में रख दिया है किसको, नेक्स्ट ईडी डायरेक्टोरेट को. और कोर्ट ने क्या किया है, एक नया अनडिफाइंड, ओके, लार्जर नेशन इंटरेस्ट, ओके, इट इज पुट इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बिकॉज द कोर्ट एग्जैक्टली सेड दिस. ओके, सो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट टू अलाउ हिम, कि इसमें पूरे देश का भला है कि उनको अलाउ कर दिया जाए सितंबर 15 तक उनको ऑफिस में रहने के लिए. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट.
इट वॉज अ सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, ये जो एप्लीकेशन था ये सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन है, सबसे पहली बात तो। ओके, ऑथर इज हाईली ओपिनियनेटेड, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर दैट द ऑथर इज, दिस इज कंप्लीटली द ऑथर। ओके, द ऑथर सर्विंग इट। ओके, नाउ द ऑथर विल एक्सप्लेन व्हाई। ओके, कैसे ये सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन है। The ostensible reason that the government finds his service indispensable is that he is helming the country's effort to demonstrate its framework to counter money laundering and the financing of terrorism during a country review before the Financial Action Task Force (FATF). Okay, तो अब क्या बोल रहा है कि इट वॉज अ सेल्फ सर्विंग एप्लीकेशन इन द फर्स्ट प्लेस। ये जो एप्लीकेशन था ये सेल्फ सर्व करने के लिए था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए था। ओके, द ऑस्टेंसिबल रीजन, जो रीजन दिया गया है गवर्नमेंट का, फाइंड्स हिज सर्विस, उनको कि क्यों उनका सर्विस इतना इंडिस्पेंसिबल माना जा रहा है। गवर्नमेंट ने रीजन क्या दिया है कि ये पूरे कंट्री का एफर्ट टू ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए जो एफर्ट है, और टेररिज्म रिव्यू करने फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये दोनों चीजों के लिए इनकी हेल्प की बहुत जरूरत है। ओके, ही इज एट द टॉप ऑफ दीज टू थिंग्स। ओके, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट, ये रीजन किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया। ओके, ओके, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। ओके, the multilateral body adopts a mutual evaluation system and India's ongoing review will go on until June 24। अब देखो, ये ये वाला जो एफर्ट है ना, बिफोर दी एफएटीएफ। ओके, ये चाह रहे कि ये वाला जो काम हो जाए ये एफएटीएफ के पहले हो जाए। ओके, द मल्टीलैटरल बॉडी अडॉप्ट्स अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये जो मल्टीलैटरल बॉडी किसके बारे में बात कर रही है? एफएटीएफ मल्टीलैटरल बॉडी, ये क्या करते हैं? म्यूचुअल इवैल्यूएशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, और इंडिया का ऑनगोइंग रिव्यू चल रहा है जो जून 2024 तक चलेगा। ओके, when the final evaluation report may be considered at a likely plenary discussion on its compliance status। Okay, so when the final evaluation report, ठीक है, ये जो फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होगा ये इस चीज पे देखा जाएगा कि कितना कंप्लायंट है। ओके, कितना कंप्लायंट है नेशन टू एड्रेस दीज कंसर्न्स। ओके, द गवर्नमेंट sought an extension of his service until October 15th, presumably because the country's agencies and institutions may be ready by then for an on-site visit by an FATF delegation। ओके, सो अब गवर्नमेंट ने किस लिए मांगा था ये एक्सटेंशन? उन्होंने अक्टूबर 15 तक प्रिज्यूमेबली मांगा था, इसलिए। ओके, एक तो यहाँ पर उनका रीजन दिया जा रहा है कि क्यों उनको इंडिस्पेंसिबल माना जा रहा है। ओके, क्योंकि ये अभी एफएटीएफ का आने वाला। ओके, और उसके बाद प्रिज्यूमेबली ऐसा बोला, गवर्नमेंट ने बोला अगेन कि अक्टूबर 15 तक इसलिए हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं ताकि कंट्री और एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन सब रेडी हो जाए, एफएटीएफ के डेलीगेशंस आए उससे पहले। ओके, और रिव्यू करे, ऑन साइट देखे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उससे पहले सब कुछ सही हो जाए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज needed for them। Okay, he is needed। Okay, as the agency that administrators the law against money laundering, the ED may have a key role in preparing the country's presentation, but it is difficult to believe that the process depends on one individual। Okay, so the author is saying कि ठीक है, मान सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी को, ईडी के डायरेक्टरेट की रोल प्ले करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में और उस चीज में। ओके, कि कंट्री का प्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन ऐसा हम मान ही नहीं सकते, ये तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं हुई कि एक ही इंडिविजुअल पे ये पूरा चीज बेस्ड है। ओके, सो दिस इज द ऑथर बीइंग स्केप्टिकल। ओके, अबाउट द सिचुएशन, इवन इफ, व्हाट एम आई डूइंग, even if it were so, nothing prevented the government from utilizing Mr. Mishra's service for FATF purpose alone while leaving the directorate's routine activities under his successor। अब देखो, अगर ये केस भी है तो ऐसा तो करना जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को कि मिस्टर मिश्रा की सर्विसेज नहीं यूटिलाइज कर सकते एफएटीएफ के पर्पस के लिए, और उनके जो सक्सेसर है उनको कंटिन्यू करने दे एज ए डायरेक्टरेट। ओके, उनकी सर्विसेज ही चाहिए, उनको वो पोजीशन पे नहीं चाहिए, उनकी सर्विसेज बस चाहिए, राइट? तो वो कर सकते हैं हेल्प, बट सक्सेसर को तो कंटिन्यू करने दो भाई।
In any case, various agencies and authorities are involved in framing the country's policies on money laundering and terrorism financing. और कुछ भी हो, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, बस ईडी की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है अगर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और पॉलिसीज के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, एक किसी इंसान की नहीं. That he is indispensable. Okay. The author saying it is unfortunate that the courts did not countenance argument that highlighted these points. Okay, और ये बहुत दुख की बात है. It is unfortunate. Okay, the author is saying कि unfortunate है कि कोर्ट ने ये सारे पॉइंट्स नहीं रेज किए. Okay, कोर्ट्स ने ये सारे पॉइंट नहीं रेज किए. कोर्ट ने it did raise question as to how one person could be indispensable, but ultimately chose to allow him to continue for some time. Okay. उन्होंने पूछा ये बात कि कैसे एक ही इंसान इतना इंडिस्पेंसिबल हो गया है कि आगे नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अलाउ कर दिया उनको थोड़े और टाइम तक ऑफिस में रहने के लिए. ओके. One can understand the argument that the country's image depends on a positive FATF evaluation, but the claim that not giving Mr. Mishra an extension might result in a नेगेटिव इमेज इज क्वाइट इनकॉम्प्रिहेंसिबल. ठीक है, हमें समझ में आता है कि एफएटीएफ का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है एक कंट्री के लिए. ओके. इसका इवैल्यूएशन और अच्छा इवैल्यूएशन होना ये बहुत जरूरी है कंट्री के इमेज के लिए, लेकिन एक इंसान का एक्सटेंशन इसलिए करा देना क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो नेगेटिव इमेज बन जाएगा. ओके. कंट्री का, दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. India's credentials will be evaluated on its laws, systems, and compliance with global standards, and not who prepared the report. Okay, तो इंडिया का रिपोर्ट जो इवेल्युएशन होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? दिस विल डिपेंड ऑन थिंग्स लाइक लॉज कैसा है, सिस्टम कैसा, और कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ना कि कौन ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है. ओके, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी brought to question. Okay, उस पे नहीं डिपेंड करता इंडिया का इमेज. The court's permissiveness detracts from its resolve to hold the government to account for actions that it had itself declared illegal. Okay, तो ये जो कोर्ट का जो परमिसिव डिट्रैक्ट्स, ये जो परमिसिवनेस है, ओके, मतलब कोर्ट ये जो परमिशन दे रहा है ये उसी का अपना ही जो इन्होंने ये किया था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं. ओके. उसी को वापस से ये क्या कर रहे हैं, उसी एक्शन को ये वापस से अपने ही एक्शन को क्या कर रहे हैं, ये इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं. ओके. सो दैट इज व्हाट द लास्ट लाइन सेज, द कोर्ट्स परमिसिवनेस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स रिजॉल्व टू होल्ड. तो ये जो इन्होंने ये किस चीज से पीछे हट रहा है, ये जो कोर्ट का जो परमिशन दे रहा है, ये परमिशन दे के कोर्ट किस चीज से पीछे हट रहा है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए पीछे हट रहा है. ओके. सो दिस इज द एडिटोरियल. और अब बताओ आप मुझे कि टोन क्या है. No, there's something that you guys are missing. Something that you guys are missing. देखो, ये अपने ही डिसीजन को क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहा है? By allowing ED's chief countenance, the SC has undermined its own authority. Okay? अपनी ही अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ही अथॉरिटी को. ओके, सो दिस इज पैराडॉक्सिकल, इजंट इट? या आयरॉनिकल? I think ironical would be a better thing. Critical, all that is fine. But the author is definitely very, very strongly opinionated, and this is negatively impacting. Okay, कि author बार बार इसमें यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सारे questions क्यों नहीं पूछे गए. Okay, why did it is basically a self-serving purpose. Okay, so the author is trying to say कि ये अपना purpose solve कर रहे हैं. Yes, so skeptical can also be one.
right? All right. So these are the three tones that we can say today, because the author is trying to tell you the irony in the entire situation. कितनी irony है इस पूरे situation में कि खुद की ही decision को वो क्या कर रहे हैं, undermine कर रहे हैं. Okay, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, और क्यों ऐसा कर रहे हैं. Okay, so this is like basically self-serving purpose है यहाँ पर. इसका तो कोई sense ही नहीं बन रहा है कि FATF के इसके वजह से कि इवैल्यूएशन की वजह से ये डेजिग्नेशन पे मिस्टर मिश्रा को ही रहना बहुत जरूरी है. ये इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल in the eyes of the author. All right, so this is the editorial of today, and this these are the tones of the editorial. I hope this is clear to everyone. So that's it for today, everyone. Thank you. Bye bye, Aditya. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And thank you and Dankeschön and merci. Orfa, Hiwan, and bye bye. Alpesh, thank you for saying that it was an awesome session. As always. Thank you. Bye, Vedika. Have a great day. You too, sweetheart. Have a great day. Awesome. All right. Bye bye, everyone. Sakshi, bye bye. Please, nashta kar lo. Brunch kar lo. Bye.